attain success, and there are a lot of social barriers, and what mantra you want to give to a person who is inspired by your success as such? There's a very simple mantra offered in this book, which is Success Mantras and Musings. I think it will apply even for my life and my journey. Trust yourself. Believe in your own innate ability to know. There's a knowing that we're all born with. So tune into that, recognize it, respect it, and listen to it. The second thing is that success is not one moment of achievement. Success is about consistently pursuing the path of self-discovery. And to be able to do that, you need to identify your purpose. To me, success is being able to know what your purpose is and living a life that is driven by that purpose. It's not about winning a beauty title at 18 or winning an international title at 19 or being able to be in the movies, or none of that is success. Success is understanding what completes and fulfills joy in your heart. Thanks, ma'am. Dr. Manjula, SHROFF, what are you planning next? So related to the book, तो मैं नहीं जानती. Hopefully there will be a language translation. But एक चीज, हम जब मेन स्ट्रीम एजुकेशन करते हैं तो हमें बोर्ड रिजल्ट्स की बहुत इम्पोर्टेंस होता है, because the school is known by the results, and so the teachers are always running towards syllabus completion, examination, बार question papers देते रहते हैं. That is our task, right? I realized that if I am going to own up to this task, that मैं greater than, if I want to teach life and not just academics, then मेरे teacher से वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके 8 hours at school is timetable एकदम set in stone है, वो बिल्कुल हिला नहीं सकते उसको. So what I have started to do is, मेरी फंडा है, philosophy है, that unless you live a wholesome life, mental, physical and spiritual, then आप जो दिया जी ने जिक्र की, जो purpose of life है, you'll miss that. So what I have started to do is to start to train teachers and parents on purpose of life. If we have a generation of adults जो slightly higher vibration पे सोचने लगे, बच्चे अपने आप संभल जाते हैं. बच्चों पे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता. It is actually us adults that need to unlearn and then relearn. बच्चे अपने आप, बच्चों का जो innate intelligence की जो बात हम कर रहे हैं ना, वो already है. इतने layers नहीं हैं. हमारे बहुत layers हैं. उसको unpeel करना होता है. बच्चों में तो वो नहीं हुआ है. If we get the parents and teachers sorted, children will be on the right path to discover their own purpose, which is unique to every individual. I hope I was. हाँ जी, हाँ बिल्कुल आइए ना मेरे वर्कशॉप में. You are most welcome. मैम, ये कितना टाइम लगा बुक लिखने में और आइडिया कहाँ से आया आपको बुक लिखना चाहिए? आइडिया तो ये इनको जानती थी 10 साल से ज़्यादा, तो पब्लिक में बहुत, मतलब she is a famous personality from where she comes and everybody knows her. तो ये क्यूरियस हो गई अनुरिता, और उन्होंने बोला इनके बारे में तो लिखना पड़ेगा. When she found out certain aspects about her life and especially the challenges that she experienced, then she decided that this is a story to be told here. यही कहा था ना आपने. चलो, कितना टाइम लगा लिखने में? कितना टाइम? ऐसे देखा जाए तो मतलब अगर कंटिन्यूसली बैठो तो मेरे ख्याल से 6-8 महीने, बट हम मतलब इस पे जैसे मैंने कहा पूरा पैंडेमिक में लगे थे. इनका पैंडेमिक प्रोडक्टिव गया. नमस्कार, मेरा नाम सोनाली नाइक है. मैं टीवी 9 भारतवर्ष से हूँ. मेरा सवाल डॉक्टर श्रॉफ से है. आप
एक तरफ होलिस्टिक एक्सपर्ट हो और एजुकेशन में भी आप काफ़ी बिजी रहते हो, तो दोनों चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं? I am blessed with a very good team. Any leader is only known by the quality of its team. Because मेरी टीम इतना अच्छा काम करती है एकेडमिक्स में, मैं होलिस्टिक एजुकेशन में ध्यान दे सकती हूँ. अगर मैं डे टू डे ऑपरेशंस करती तो शायद वो जो एक्स्ट्रा मुझे करना था मुश्किल पड़ता. बट आई जेन्युइनली एम ब्लेस्ड विद अ वेरी वेरी गुड टीम. आप कुछ बोलना चाहें? How do you? I also think that when you're driven with purpose, time becomes abundant. It opens itself up for you. It's very interesting. When we are stressed, when we're filled with anxiety and we're not happy doing what we do, time becomes short. We lose time very fast. But when we're doing something that gives us joy, time opens up. That's my experience. That you have noticed. Thank you. Thank you. Dr. Manjula. So I'm sure that you told me a bestseller all over the world. But the conversation is for you, like, I told you planning something about this diary, about her life. So we have read so much about diary criticism, not only Indian criticism. So that will be good. Thank you so much for the idea. अभी तक तो सोचा नहीं है. She is not, actually, I want to. There's a lot that she's not revealed in this book. I want another book which has everything in it. Everything. I want to know everything. मुश्किल काम है. And she'll have to write it herself because ये किसी को बताएंगे नहीं. इनको ऐसे लिखना होगा इसकी जैसे आपने कहा. She'll have to write it like her own diary. मुश्किल काम. इसीलिए जब लोग बार बार इसे बायोग्राफी कह रहे हैं, मैं उनको नहीं बता it's देती not. हूँ कि इट इज नॉट अ बायोग्राफी. दैट इज व्हाट आई हैव बीन सेइंग फ्रॉम डे वन. बट क्योंकि उनकी लाइफ के ऊपर है, उनके थॉट्स के ऊपर है, तो लोगों को ऐसा लगता है. क्योंकि उनकी लाइफ और उनके थॉट्स पे है, तो उनको ऐसा लगता है. उनकी लाइफ के काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं इसमें, बट दिस इज नॉट अ बायोग्राफी. दिस इज अबाउट हर थॉट्स, अबाउट हर जर्नी, एंड विच इज गेट इंटरस्पर्स्ड विद एक्सपीरियंसेस एंड लिटिल पर्ल्स ऑफ विजडम. बायोग्राफी बाकी है, वो मैं लिखवा के रहूँगी. Thank you. Thank you, ma'am. Hello. Here. जी. My name is POOJA. So सबसे पहले तो आप तीनों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा. 3 सक्सेसफुल महिलाएं एक साथ एक मंच पर बैठी हैं. तो ये बिल्कुल आप लोगों के लिए तालियां बनती है. और मेरा सवाल पूजा मैम से है कि आप महलों की रानी रही हैं, तो एक महलों की रानी से ऐसी क्या खास बात थी कि आपको अपना आलीशान जीवन छोड़ के एक आम सफर पर चलना पड़ा? वो एक पॉइंट बताइए मुझे कि क्या था वो. हाँ, उड़ गया. Actually, you already read it, so you can tell. मम्मी का पढ़ लिया, लेकिन आप आपकी इंटरप्रिटेशन बोलो फिर. मेरे हिसाब से जी. the turning point for her was making the choice between empowering herself and losing her identity. And I think because she was young, she had lost a lot of people she was very close to, she respected and loved. She had lost her mom, she had lost her uncle. The family would have gotten her married. She was at that young age, she was 21. अगर ये चली नहीं जाती तो इनकी शादी हो जाती. So she chose education. She chose to study and do it on her own terms. That's what she chose. Amazing. Amazing. See, isn't it amazing? Absolutely. See, isn't it amazing? She's read the book, but she's a woman who thinks beyond. वो डीपर थिंकिंग कर रही हैं, वो डीपर लेयर्स पे थिंक कर रही हैं, विच इज़ वाई शी नोज दैट आप अगर किसी चीज़ के लिए बाहर निकलते हैं घर से, फ्रॉम अ प्रोटेक्टेड होम, फ्रॉम अ होम दैट मोस्ट पीपल विल थिंक एनवियसली अबाउट, इट हैज़ टू बी फॉर योर ओन ग्रोथ एंड एम्पावरमेंट. और एक पैरा इन्होंने पढ़ा था दैट माई मदर वॉज दिस वेरी ब्यूटिफुल लेडी हु वाज लाइक अ पोर्सलिन डॉल, जिनकी रोल थी टू लिसन एंड नॉट टू से. And if she's been my role model, it's been a reverse role model.
मैं बचपन से somewhere I realized that मेरी एक आवाज होनी चाहिए. I will not be just a follower. So it's all about empowerment. Yes. One more question to you, Pooja ji. Are you also Pooja? Yeah. Did you say Pooja? हाँ. Yeah. जी. So one more question to you कि आजकल का जो यूथ है वो छोटी छोटी बातों पर डिसअपॉइंट हो जाता है, कुछ बड़ा फैसला ले लेता है. तो एज अ मेंटर आप उन यूथ को क्या समझाना चाहेंगी, क्या वो एक मंत्रा देना चाहेंगी कि मतलब छोटी सी आपका लाइफ इज वेरी बिग, छोटी सी चीज़ों पर डिसअपॉइंट होना मतलब डजंट मेक सेंस, तो वो एक खास मंत्रा आज के यूथ के लिए क्या है आपका? See, इस पे तो unfortunately बहुत टाइम लगेगा. I'll say it very briefly. You're right that youth do not understand the value of life. Yes. अगर एक पार्टी ड्रेस के लिए, एक बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए किसी ने कुछ कह दिया, एक लड़की के लिए, एक लड़का के लिए अगर जिंदगी दे सकते हैं, they take their life, die. They don't understand the value of life. Yes. और शायद ये कमी हम में है एज अडल्ट्स, ये कमी हम में है एज टीचर्स, ये कमी हम में है एज पेरेंट्स कि हमने नहीं सिखा पाए हैं हाउ वैल्यूएबल लाइफ इज. तो उस पर हम बहुत काम कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू गिव देम मेंटल इमोशनल स्ट्रेंथ, टू टेल देम द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ दैट आप अगर 60% लाते हो बोर्ड एग्जाम में, आपकी जिंदगी में किसको याद है यहाँ पे कितने परसेंटेज लाए हो आप 12th में, कोई फर्क पड़ा आपकी जिंदगी में, आपकी सक्सेस में? बट ये चीज हम बच्चों को नहीं समझाते हैं, तभी तो वो अपना जान ले लेते हैं if they don't get 90%, because we don't tell them. So वो काम हम पेरेंट्स के जरिए कर रहे हैं मैम. I hope I understand. Yeah, I understand. Thank you. Also, one more thing, it's about instilling self-esteem in children, which it's about instilling self-esteem in children, which in the absence of which all these things happen, you know, where small things appear very big. So one of the main key things that I think as parents and as elders in society that one has to do is to instill self-esteem in children. That in turn will probably look after other things. What did you do? In my experience, I've realized that, and it happened with me as well. I think what became a huge shift in my understanding of life was getting involved with social work. And I think that that's something that should become an innate part of every child's development and growth. When you work with people who do not have as much as you do, you develop a sense of gratitude. And gratitude is a very powerful thing, it's a very humbling thing, it's a very important tool to get through life. It is when we are ungrateful that we are so easily dissatisfied. That's one. The second is also, like ma'am mentioned, I think when you're able to make a difference in people's lives, no matter how young you are, and everyone is capable of doing that, it develops and strengthens self-esteem. And then also, of course, you recognize the value of life. So I really think that, and this is something that my school did consciously with us, and I've continued to do through life. And the one thing that has ensured that I've remained grounded and rooted is the work I do outside of films. It keeps me in touch with reality, it keeps me in touch with the truth, it keeps me humble, it keeps me grateful. And I really think that this is something very powerful that everyone should do. Help make a difference in people's lives.